Hello everyone, welcome to another class. I welcome all my 11th grade students to today's class. और आज हम लेंगे topic myths of entrepreneurship, and this is from unit 1. So let's start today's class, and it is going to be very important class from the perspective of examination and from the perspective of understanding this specific subject, entrepreneurship. So today we are going to take up myths of entrepreneurship. So let's start. यूनिट 1 entrepreneurship concept and functions. और बच्चों आज की क्लास है myths of entrepreneurship. आज की क्लास में आई एम गोइंग टू टेक अप 9 points with you. The first one is I'm going to talk about the myths of entrepreneurship. Myth exactly word है क्या, and whose words are most important when we describe myths of entrepreneurship. Then I'm going to talk about 7 myths. First myth is starting a business is easy. Second myth is high financing is necessary. Third myth is startups cannot be financed with debt. Fourth myth is banks do not lend money to startups. Fifth myth is entrepreneurs choose attractive industries. Sixth myth is growth depends on entrepreneurs' talent alone. Seventh myth is most enterprises are financially successful. And I'm going to sum up these 7 myths with a conclusion: navigating entrepreneurship with clear perspective. So let's start today's class, and we are going to learn a lot about myths of entrepreneurship. Here comes slide number 1, myths of entrepreneurship, and this is an introduction. According to Guy Kawasaki, he is the person. Many entrepreneurs believe a set of myths. देखिए बच्चों, myth क्या है? Myth is actually, here it is a lie. Just a minute. Here it is a lie. यहां पर एक ये झूठ है. तो कुछ मिथ्स ऐसे हैं जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए यूज किए जाते हैं and which actually are not the reality. It is something away from the reality. So according to Guy Kawasaki, many entrepreneurs believe a set of myths about entrepreneurship. कुछ लोग इस पर बिलीव कर जाते हैं, पर इसीलिए इस क्लास में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जा रहा है कि ये सब झूठ है, इस पर विश्वास मत कीजिए. Let's debunk these myths and gain a deeper insight into the realities of the entrepreneurial journey. So let's start with myth 1. Starting a business is easy. It's not. It's not. You know, actually, why it is not? Because, likewise in job, which is 9 to 5, 9 to 5, business is 24 into 7 into 365. So actually, job is not business and business is not job. And business is not simple. Business is not easy. If it would have been that simple, majority of the people in the world would have been doing business and they would have been successful. They are not doing it. That means it is not easy. So first challenge is starting a business involves complex processes and hurdles. A significant number of entrepreneurs struggle to establish a viable company. बच्चों, बिजनेस को स्टार्ट करने में स्मूथ रोड्स नहीं है. हर्डल्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, और कई दफा तो जो पहली सेल्स होती है ना, even that becomes very challenging. So starting a business involves complex process and hurdles. A significant number of entrepreneurs struggle to establish a viable company. बहुत सारे लोग viable company establish करने के लिए सारी जिंदगी मेहनत करते रहते. That's why management studies are important. Research shows that only 1/3 of entrepreneurs achieve positive cash flow, exceeding their owner-related expenses after 7 years. तो कहते हैं बच्चों जो 1/3 entrepreneurs हैं,
सारे एंटरप्रेन्योर्स में से 1/3 मींस 25% दे अचीव पॉजिटिव कैश फ्लो, और वो जो उनका ओनर रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो उन्हें 7-8 ईयर्स में मीट कर पाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि 25% बिजनेस में जो एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं, सिर्फ मतलब 100% में से 25% ही सक्सेसफुल हो पाते हैं, उन्हें पॉजिटिव कैश फ्लो मिल पाता है, और 7-8 साल के बाद जाके जो छोटे मोटे उनके खर्चे होते हैं वो निकल पाते हैं। What actually happens, we only observe the rosy picture of business world. We only observe cars, we only observe factories, offices, employees working, but this is one side of the coin. Another side of the coin is literally too much of hard work. And it is not even debatable. You would have seen businessmen, they are entrepreneurs, they are always on toes. It is not like job that you have started it once and you are sure that in the first week of the next month you'll surely get your salary. Entrepreneurs, they need to work 24/7, and this is what their hard work sometimes get blessings, and they become very, very successful. But if you will say starting a business is easy, it's not. It's a myth, it's not. Okay, let's move on to the second myth. हाई फाइनेंसिंग इज नेसेसरी, बहुत पैसा चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए. नो, if you are passionate about something, with lesser investment you can start your work. Financial realities are like this. Successful entrepreneurs creatively manage their finances. जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं, बट दे नीड अ लॉट ऑफ हेल्प. Many startups require moderate initial investment. Example, Infosys got started with rupees 10,000. और बच्चों, बहुत पैसे की बजाय एक एग्जाम्पल है इन्फोसिस का, जो सिर्फ मात्र 10,000 रुपए से स्टार्ट की गई थी, एंड टुडे इट इज the highest rated company in the country, which manufactures and makes softwares. और सिर्फ ये कंपनी 1981 में सिर्फ 10,000 रुपए से स्टार्ट की गई थी. तो ये भी मिथ है कि बहुत ज्यादा पैसा चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए. आपको प्लानिंग चाहिए, आपको लोगों का साथ चाहिए, एंड यू कैन एस्टैब्लिश अ कंपनी लाइक इन्फोसिस. थर्ड पॉइंट, cost saving strategies like renting assets and optimizing resources allocation are key to efficient startup growth. और बच्चों, कॉस्ट सेविंग स्ट्रेटजीज आपको यूज करनी पड़ती है, आपको बहुत जगह पर पैसा बचाना पड़ता है, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है, जितने रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूज करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर हैविंग वन ऑफिस, अ स्मॉल ऑफिस, आप उसमें वर्क स्टेशन बना के you can make 5-6 people sit in one room, and you are optimizing and allocating the resources available to you. This is not even done in the initial stages. In the later stages even you have to optimize resources. तो कहने का मतलब ये है कि हाई फाइनेंसिंग नेसेसरी नहीं है, कम फाइनेंसिस से भी आप अपना वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं. Likewise, Infosys started it way back in 1985 with only 10,000 rupees. In the next slide, I have brought in an excerpt of Infosys story for you all in order to make your learning easy. And here it is, story of Infosys. बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तभी मैंने स्टोरी को इंट्रोड्यूस किया है. It was started by Infosys, one of the India's largest IT services company. Was founded by Narayan Murthy ji. He is out here, and Sudha Murthy, his wife. You must be knowing about Sudha Murthy nowadays. She's a very good writer. She's an acclaimed entrepreneur, and she's the wife of Narayan Murthy ji, and he's a commendable entrepreneur. अब जो नई चीज आज आप सीखने जा रहे हैं वो ये देखिए. And his 6 colleagues, Nandan Neelakani, N.S. Raghavan, S. Gopalakrishnan, S.D. Shibulal, K. Dinesh, and Ashok Arora.
These were 6 people, those who were associated, those who were, working along with Narayan Murthy ji, and they have started Infosys. I'll show you the picture. Here is the picture of all these fellows who have started Infosys. Initial funding, Infosys was founded by Narayan Murthy in 1981. He founded this company in 1981, and his colleagues, और के colleagues ने मिलकर, they pulled together their savings. उन्होंने पैसे मिलाए, with Narayan Murthy contributing only rupees 10,000. This initial capital was used to kickstart the company's operations. However, it is important to note that this amount was not sufficient to sustain the company's growth over the long period of time. तो सबने थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाया, 10,000 रुपया नारायण मूर्ति जी ने भी मिलाया, और कहा तो ये जाता है कि इट वॉज द मनी सेव्ड बाय सुधा मूर्ति जी, और वो उन्होंने पैसा दिया, एंड विद दैट मनी ही स्टार्टेड हिज वेंचर. Additional funding, as Infosys started taking on projects and gaining clients, the company needed additional funds to support its expansion. तो जैसे जैसे काम बढ़ता गया, कंपनी को और पैसे की जरूरत पड़ने लग पड़ी अपने ऑपरेशंस को मेंटेन करने के लिए. Infosys secured projects from clients in the United States, which helped generate revenue. इससे उन्हें पैसा मिलता. The founders also actively sought funding from various sources to fuel the company's growth. तो मात्र 10,000 रुपए से या कलीग्स की फंडिंग से ही कंपनी स्टार्ट नहीं हुई थी, उन्होंने और जगह से भी फंडिंग ली थी, बट कहा यही जाता है कि बहुत कम पैसे से इस कंपनी को स्टार्ट किया गया. Role of Sudha Murthy, Narayan Murthy's wife, played a pivotal means significant role in the early days of Infosys. She lent her car to the founders for clients' visit and also allowed them to use their house as registered office. Commendable. Her support and contribution were instrumental in helping Infosys establish a foothold in early years. तो फ्रेंड्स, एक कलेक्टिव एफर्ट था नारायण मूर्ति जी का, सुधा मूर्ति जी का, और उनके 6 कलीग्स का, 6 फ्रेंड्स का, जिन्होंने मिलकर इन्फोसिस की नींव रखी. एंड टुडे इट इज इंडियाज लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज का. हाउ मेनी इयर्स? 42 इयर्स. और यहाँ पे एक वर्ड है पाइवोटल. पाइवोटल का मतलब होता है सिग्निफिकेंट. आई विल राइट इट डाउन. Let's move on to the next slide. Myth number 3. Startups cannot be financed with debt. स्टार्टअप्स को आप फाइनेंस नहीं कर सकते उधार पैसा ले, और ये झूठ है. आप कर सकते. डेट एंड ग्रोथ, आप जब पैसा लेते हैं तो मेरा ये मानना है कि जब आप उधार पैसा लेते हैं तो ज्यादा शिद्दत से काम करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं अपने काम, कि पैसा आपको वापस करना होता है. डेट बेस्ड फंडिंग इज अ कॉमन एवेन्यू फॉर स्टार्टअप फाइनेंसिंग. तो बच्चों, डेट बेस्ड फंडिंग एक कॉमन तरीका है किसी कंपनी को स्टार्ट करने. किसी भी इंडस्ट्रीज, जो आज बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, बिजनेस मैग्नेट्स हैं, आप उनकी हिस्ट्री उठा के पढ़ लीजिए. किसी के पास पैसा नहीं होता, ये पैसा उधार लिया जाता है. बट यस, they had one great thing with them, that is their idea, self belief and courage to become successful. And for that is going to be a beautiful concept which they can use. Entrepreneurs strategically employs debt alongside equity to support growth. कुछ लोग सिर्फ उधार लेते हैं, कुछ इक्विटी पर काम करते हैं. इक्विटी का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल, मतलब इससे मैं हिंदी में लिख देता हूँ, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. इसे हम कहते हैं हिस्सेदारी. हिस्सेदारी. फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी 100 रुपीज की है और किसी कंपनी ने उस कंपनी में पैसा लगाया, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए, फॉर एग्जाम्पल. तो जो इन्वेस्टर होगा उसकी इक्विटी कर दी जाएगी 5% ऑफ कंपनीज रेवेन्यू फॉर कमिंग 5 years. तो जैसे उनको पैसा मिलेगा प्लस थोड़ा प्रॉफिट मिलेगा, दे कैन गेट अवे फ्रॉम द कंपनी. तो देयर आर सर्टेन पीपल दोज़ हु वर्क लाइक दिस. इक्विटी में बेनिफिट्स ये है कि अगर फायदा नहीं होता है तो जिसने इन्वेस्ट पैसा किया है वो
तब भी आपके साथ ही बना रहेगा, because he has invested the money and he wants his money back, so he has to stay with the company. So certain people, they go with debt, and certain they go with equity. The dynamic balance between debt and equity influences a startup stability and expansion. तो कुछ उधार से पैसा, कुछ इक्विटी से पैसा जब मिलके एक साथ काम करता है, तो काम में स्टेबिलिटी आ जाती है और कंपनी चल पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टार्टअप्स हैं उनको आप उधार के पैसे पर स्टार्ट कर सकते हैं। देयर इज नो हार्म विद इट, people are doing it, and people those who are not believing on it, they should start believing that it happens। पर ये झूठ है। स्टार्टअप्स कैन नॉट, स्टार्टअप को आप नहीं स्टार्ट कर सकते विद finance and debt from other companies. No, you can start it. Okay. Let's move on to the next slide. Myth 4, banks do not lend money to start, बैंक स्टार्टअप्स को पैसा नहीं देते, ये भी झूठ। बैंक्स एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ऑफर फंडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टार्टअप। तो देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि बैंक्स पैसा नहीं देते, मेरा मानना ये है कि उन्हें अपने बिजनेस पर विश्वास ही नहीं, अपने ऊपर विश्वास। अगर अपने ऊपर विश्वास होगा ना, आप बैंक के 5 चक्कर लगाएंगे ना, यू विल गेट एन आउटपुट हाउ टू गेट द मनी फ्रॉम बैंक। आर यू गेटिंग इट? और अगर विश्वास नहीं होगा तो आप यही कहते रहेंगे बैंक तो पैसा देता नहीं है, बैंक तो पैसा देता नहीं है, तो यू स्टार्ट बिलीविंग दिस मिथ हैज। सेकेंड पॉइंट, एंटरप्रेन्योर्स कैन एक्सप्लोर वेरियस फंडिंग चैनल्स। बहुत सारे फंडिंग चैनल्स को और एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें एंजल इन्वेस्टर्स भी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, जो इनिशियली पैसा लगा देते हैं और जब आप पैसा कमा लेते तो वही पैसा उनका। Building strong relationships and presenting compelling business plans enhance the likelihood of obtaining financial support. तो अच्छी आपकी रिलेशनशिप बन जाती है, प्रेजेंटिंग अ गुड बिजनेस प्लान कि मेरा बिजनेस आगे प्रॉफिट्स अर्न करेगा, एनहांसेस द लाइकलीहुड ऑफ ऑब्टेनिंग फाइनेंशियल सपोर्ट। और जब फाइनेंसर्स को पता चलता है कि यू आर रनिंग अ प्रॉफिटेबल शो, वो कभी भी नहीं रुकते इन्वेस्टिंग मनी इनटू द business. So very important point. Third one is very important. Building strong relationships and presenting compelling business plan enhances the likelihood of obtaining financial support. आपको बैंक्स में जाकर अपने बिजनेस प्लान को उनके साथ शेयर करना है, और अगर वो कंपेलिंग है, उसके अंदर अगर उन्हें कुछ सिल्वर लाइनिंग नजर आती है, कुछ होप्स नजर आती हैं, they will surely fund your business. Let's move on to the fifth myth. Entrepreneurs choose attractive industries. कोई भी entrepreneur नॉन अट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में काम ही नहीं करता। ये होता तब है फ्रेंड्स, जब आप है ना किसी कंपनी को ना ग्रो होता हुआ देख चुके होते। फॉर एग्जाम्पल, हजारों कंपनीज है जो बिस्किट्स बनाती हैं, बट यू विल टॉक अबाउट टॉप 10 कंपनीज ऑफ द कंट्री, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ही अट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, बट इट कंटेन्स एन नंबर ऑफ चैलेंज। तो ये भी झूठ है कि सारे एंटरप्रेन्योर सिर्फ अट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में पैसा लगाते हैं। इंडस्ट्री डायनेमिक्स देख लेते हैं। Entrepreneurs often ventures into diverse industries, different type of industry, not necessarily the most attractive ones. आप देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पैकिंग की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कुछ लोग पेपर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो लोग अनअट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में भी यू नो मेहनत करके पैशनेट होकर बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। एक ऐसी ही कंपनी है हाथी छाप। हाथी छाप innovative use of unconventional raw materials exemplifies how unique industries insights can drive successful entrepreneurs. पर जो हाथी छाप एलिफेंट डंग से कितने प्रोडक्ट्स बनाता है, तो ये कितना क्लियर एग्जाम्पल है कि आप अनअट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में भी अपना MTR, मनी टाइम एंड रिसोर्सेज इन्वेस्ट करके यू कैन स्टार्ट अ वेंचर। Let's talk about Hathi Chhap a bit. Hathi Chhap is a brand that's famous for its handmade paper and products. ये handmade papers बनाते हैं और products बनाते हैं। The name Hathi Chhap translates the elephant stamp in English. The brand is known for its eco-friendly and sustainable approach to paper making.
and its commitment to preserving traditional craft techniques. तो ये ट्रेडिशनल वे से पेपर बनाते हैं and they generally make things by hand. हाथी चाप products are made from recycled materials, primarily using waste cotton rags. कॉटन के जो कपड़े होते हैं, आप होते हैं ना जैसे हम कपड़े की कतरने कहते हैं, जो पतला पतला कपड़ा बच जाता है दर्जियों के पास और इंडस्ट्रीज में, तो वो ये इकट्ठी कर लेते हैं, उससे भी ये प्रोडक्ट बनाते हैं. And are manufactured through a labor intensive process that involves handcrafting each sheet of paper. और अपने हाथ से हर sheet of paper बनाते हैं. The paper making process used by हाथी चाप often employs ancient techniques. पुरानी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं ये पेपर्स बनाने के लिए, such as using wooden molds यूज करते हैं, and screens to create textured and unique paper. The brand's handmade paper is used to create a variety of products, including notebooks, journals, greeting cards, stationery, envelopes, and other paper-based items. These products are popular among individuals who value environmentally friendly and ethically produced goods, as well as those who appreciate the aesthetic and tactile qualities of handmade paper. तो बच्चों, handmade paper बनाने से एक तो pollution कम होगा और लोगों को काम ज्यादा मिलेगा, और ऐसे लोग जो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हैं, दे विल ऑलवेज सपोर्ट दिस प्रोडक्ट, these sorts of products. Hathi Chap focus on sustainable practices, craftsmanship, and artistic value has contributed to its reputation as a unique and socially responsible brand in the realm of paper products manufacturing. And I just show you now. This is their stamp, elephant poo paper. They make paper with elephant poo, made using only the finest dung available in India. And this is what their stamp looks like. So it is very convenient to make these such papers, and it is really, appreciated by the people, those who are, supporting environmentally friendly production practices to manufacture items. Let's move on to myth number 6. Growth depends upon entrepreneurs' talent alone. अगर एक entrepreneur talented नहीं होंगे या होगा, तो ग्रोथ कंपनी में नहीं आ सकती, और ये भी सरासर झूठ. और कैसे है? लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स इट. इन्फ्लुएंस ऑफ इंडस्ट्री. इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट प्लेज अ पिवोटल रोल इन डिटरमाइनिंग स्टार्टअप ग्रोथ. किस टाइप की इंडस्ट्री आप चला रहे हैं, और कई बार डिपेंड करता है कि कई इंडस्ट्रीज में आपको ग्रोथ ज्यादा मिल जाती है, कईयों में कम मिल पाती है. इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट प्लेज अ पिवोटल रोल इन डिटरमाइनिंग स्टार्टअप ग्रोथ. The Y2K phenomenon witnessed exponential growth in specific sectors like .com companies. An entrepreneur's talent combined with industry trends and demand patterns shapes the trajectory of the growth. अब देखिए फ्रेंड्स, एक जब Y2K प्रॉब्लम आई थी, तो Y2K ईयर 2000 प्रॉब्लम, Y2K stood for Y2K ईयर 2000. जब 1999 के बाद एकदम से हम 2000 में आए थे, तो सारी फिगर्स चेंज हो गई थी. तो उस टाइम के बाद बहुत सारी कंपनी, स्पेसिफिक सेक्टर्स कंपनी सामने आई, जिसमें से बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है .com कंपनीज. और इसके बाद बच्चों, सिर्फ एंटरप्रेन्योर का टैलेंट ही नहीं, एंटरप्रेन्योर्स टैलेंट ही नहीं, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और उसके डिमांड पैटर्न्स को जब क्लब किया जाता है, जब ऐड किया जाता है, तो इट शेप्स द ट्रेजेक्टरी ऑफ ग्रोथ. तब ग्रोथ आती है एंटरप्रेन्योर की. सिर्फ टैलेंट से नहीं आ सकती, या सिर्फ प्रोडक्ट डिमांड से नहीं आ सकती, या सिर्फ इंडस्ट्री ट्रेंड से नहीं आ सकती. इनको कोलैबोरेट किया जाता है, और हर जगह ऐसा ही. सिर्फ एक आदमी अच्छा बैट्समैन होने की वजह से एक अच्छा प्लेयर नहीं बनता. वो अच्छा बैट्समैन भी है, उसके अंदर स्किल्स भी हैं, ही इज रेगुलरली गोइंग एंड फेसिंग ट्रायल्स, फेसिंग क्रिटिसिज्म, showing his skills, playing matches, and one day he gets recognized. So this is likewise it happens. Let's move on to myth number 7. Most enterprises are financially successful. आप जितने भी एंटरप्राइजेस देख रहे हैं, कंपनीज देख रहे हैं, वो सब फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल है. ऐसा नहीं है, ये झूठ है. कई लोग तो सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि काम करना उन्हें अच्छा लगता है.
The money is a residue for that. Wealth distribution. Entrepreneurship generates wealth, but it's distributed unevenly. Kuch companies have which are growing by leaps and bounds. They are having good client number. They are having good orders. Their product manufacturing is big, and they are serving a large community. And certain they could not. A small percentage of entrepreneurs earn more than typical employees. कुछ entrepreneurs बड़ी इंपॉर्टेंट बच्चों ये बात है, ऐसे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं और जो कई एम्प्लॉइज से भी कम कमा रहे हैं, बट स्टिल दे आर डूइंग बिजनेस. कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए. एंटरप्रेन्योर बनना आसान नहीं है, और कुछ एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जो चला तो अपना बिजनेस रहे हैं, पर वो कई एम्प्लॉइज से कम पैसा कमा रहे हैं. The entrepreneurial path may involve financial challenges that differ from traditional employment. Traditional employment में बच्चों financial challenges हैं, और वो different type के हैं. थोड़ा बहुत पैसा आपको मिलता रहता है, but when you talk about entrepreneurs and their path, it is all together, a different path. Sometimes you'll get immense of money, and sometimes you have to restrict yourself because you won't get any money. So both the streams are different. So most enterprises are financially successful. It's some myth. So this was the last myth. So let's move on to the conclusion. Dispel these myths to navigate the entrepreneurial landscape with clear perspective. ये सब झूठ है, इन पर विश्वास मत कीजिए, और entrepreneurial landscape पर full force से आगे बढ़िए. By understanding the realities and complexities, aspiring entrepreneurs can make informed decisions, fostering a higher chance of success in their ventures. अगर being entrepreneurs आप इन realities और complexities को समझ जाएंगे, तो future is all yours. और ये सब myths हैं. So before I wind up, let's have a look towards what we have covered today. Introduction, Guy Kawasaki myths of entrepreneurship के बारे में बताया था. हमने 7 myths ली हैं. Starting a business is easy, myth number 1. High financing is necessary, myth number 2. Startups cannot be financed with debt, myth number 3. Banks do not lend money to startups, myth number 4. Entrepreneurs choose attractive industries, myth number 5. Growth depends on entrepreneurs' talent alone, myth number 6. Most enterprises are financially successful, myth number 7. And conclusion, navigating entrepreneurs can have clear perspective once they have understood these myths altogether. So बच्चों ये झूठ है, इस पर विश्वास नहीं करना है. So with this note, let's move on to our rigorous practice section, in which you will get 10 vocabulary words from today's class along with meaning. Short questions along with answers. Here are the questions, and on the next sheet you will get all the answers to these 10 questions, synopsis of today's class, and 10 objective type question with 4 options each and answers at the back. So bacho, when you will take classes from Lucky Sir and you will take classes from Mavericks India Solution, you will always gain, you will always get benefited. And the best part is we are not charging a single penny from anyone to take up these classes with us. So these are the 10 questions. Practice them, and ask questions to me. These are the answers. So bacho, today we have taken a myths of entrepreneurship unit 1. We are heading towards the end of this unit soon, और बहुत जल्दी I'll take up a new unit with you. But before I'll wind up unit 1, I'll take a long session with you all on objective type questions on the complete unit 1. So thank you very much. Please subscribe our other channels too with these 2 links that I've shared. It's a presentation by Team Mavericks India Solution. With Mavericks India, you will always be. So thank you very much for being here with us. Keep subscribing our channel, keep learning, keep evolving, keep performing. And until we meet next time, bye-bye for now. God bless you all.